Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor, and today I am willing to demonstrate that how we can visualize our objects in three dimensions. So first, what you need is some database which is having numerical values. Here, what I am willing to show is how a tree would appear. Though I would be using very basic shapes, but I would try to make it visually appealing. So here, what I have is a Zadiracta indica and I have some attributes associated with the same. You may check. So I have its lat long, the circumference, height of the tree, dBH. I have the canopy diameter. So all in all, I'll be using the height and the canopy diameter, these two values, and you have to make it sure that these are the real numbers, right? Numerical values, non-string values. So that is one thing. Second, I have this buildings, and for which I have their heights in meters, and with the help of this numerical values I'm trying to convert this into a 3D visualization. But for that I would be using the QGIS to 3JS plugin. Now, if in case you are not using it that frequently, you won't be having it. So for that, you can go to plugins, manage and install plugins. I have already shown how to install and manage plugins. So you'll have to use that. So in all, since I have typed QGIS2, it shows me all the plugins with names which starts with this letters and numbers, and since it is already installed, there is a check mark. This box is checked, so I am closing it. But if in case you have not installed, you will need to install this plugin before you move ahead. Now, for the trunk of the tree, I'll be using this A indica, but this point, but I need another layer or another shapefile which I would be using to demonstrate the canopy. So I have created another layer and just renaming the layer, sorry, and renaming the layer with the name canopy. Now there are certain modifications which needs to be done at this moment. So we need to change certain properties since this A indica would be acting as trunk of the tree. I am willing to make it brown in color. I am taking a shade of brown. Okay. And then apply. Next, in the same menu, I'm clicking on 3D view and clicking on single symbol. It will be asking me couple of options. I have drop down menus. In here, I am using this as a cylinder. So I want this trunk to be appearing as a cylinder in 3-dimension view. Click on apply. Okay. Next, we are moving ahead with the properties of this canopy. I want this canopy to be appearing green in color. So I am choosing this shades of green. कि जो पत्ते हैं वो तो हरे ही रहेंगे unless and until it is some specific type of tree. और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे सिंगल सिंबल कर देता हूँ, और चूंकि ये कैनोपी है आई वांट इट टू बी स्फेरिकल इन अपीयरेंस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्फीयर. अप्लाई. ओके. एंड देन बिल्डिंग्स, आई वांट दिस बिल्डिंग्स टू बी अपीयरिंग इन रेड. तो सिंगल सिंबल यहाँ पे मैं कर देता हूँ. डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस, अभी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस जो 3D आउटपुट के लिए जितना बेसिक जरूरत है उतनी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ. अप्लाई. एंड देन सिंबोलॉजी, आई वांट दिस बिल्डिंग्स टू बी अपीयरिंग इन रेड. यू कैन चूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस, पर मुझे इसको रेड में दिखाना है, सो आई एम यूजिंग दिस. ओके. अप्लाई. तो ये जो विंडो है हमारा QGIS कैनवास वाला विंडो है, यहाँ का काम हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया है. नाउ आई एम ओपनिंग दिस QGIS to 3JS exporter, and then what I get over here is a blank thing. तो लेयर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. सो आई हैव अ फ्लैट DEM. ये वही 2D लेयर है जो आप कैनवास में देख रहे थे. देन पॉइंट, आई एम क्लिकिंग ऑन ए इंडिका एंड देन कैनोपी. ठीक है, तो ये आप देखिए कैनोपी इज अपियरिंग इन ग्रीन एंड ए इंडिका इज अपियरिंग इन ब्राउन, जब दोनों को मैं यहाँ पे. एंड देन आई वांट द बिल्डिंग्स एज वेल. ठीक है, तो अब इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं. एंड नाउ we need to make certain modifications. A indica, I'm using it as trunk, so I'm going to the property.
टाइप आई एम चेंजिंग टू सिलेंडर। जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रख रहा हूँ। जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आपको ये जो डीएम है, ये जो लेयर है, उससे कितनी ऊंचाई पे आपको ये अपीयरेंस चाहिए। रेडियस आई एम कीपिंग इट 2 एंड जो हाइट है ज्योमेट्री, अब यहाँ पे है कैच, यहाँ पे आई एम यूजिंग द हाइट। सो आई वांट दैट सिलेंडर टू हैव द हाइट which is actually representation of the height of individual tree and clicking on OK. So you would see कि यहाँ पे आपके सिलेंडर्स आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, वी गो टू कैनोपी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। अब कैनोपी मुझे चाहिए ये जो, एक मिनट में आपको दिखा दूं, ये जो सिलेंडर है इसके टॉप को सेंटर कंसीडर करके मुझे कैनोपी चाहिए, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, कैनोपी का जब प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं तो उसके जेड कोऑर्डिनेट में मैं ऐड कर रहा हूँ हाइट, मतलब ये उतनी हाइट से स्फेयर का सेंट्रोइड रहेगा एंड उसका जो रेडियस है, आई वांट दिस रेडियस टू बी द diameter of canopy and click on apply, right? So here you have your trees appearing lollipop जैसे दिख रहे हैं, पर it can represent the trees। और यहाँ पे जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज, टाइप इज पॉलीगन, पर इसके अंदर हम कर रहे हैं एक्सक्लूडेड। z कोऑर्डिनेट ठीक है जितना है, हाइट जो है ज्योमेट्री, सो अगेन वी वांट टू यूज द हाइट, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। So now you have your buildings and your trees in 3 dimensions। तो आप इतना करके इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वी हैव फर्दर ऑप्शंस ओवर हियर, कैमरा मोशन और बाकी डिटेल्स, एंड यू कैन प्ले विथ मल्टीपल कलर्स एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स दैट यू हैव। So that was all from my side. Have a good day. Goodbye.